Yeah, no. Right now, we'll be having an interaction with our Bihar State topper of IIT. Those who are having any questions related to the examination, those who are planning to give that examination, will be most welcome with their appropriate questions that you can make. The rest of the information that will be given, whatever interaction takes place, you can just jot it down in your notebooks. Right? But make the most of this interaction. It is very much needed that you will take a disciplinary work. Repeatedly, I am telling you this. If I find anyone doing any history, whether it is class 8, class 9, class 10, any class, you will be thrown out immediately out of the hall. Video, short video. Good afternoon, everyone. As you know that several interactions happened in our campus. Continuation with that, this is the another interaction which is going to happen with you all guys. So what is so special about this interaction is, this is purely related to the academics. Those who are willing to achieve something in their life, I think such interaction will always be helpful. We used to know like what happened and what kind of the preparation everyone one person is doing in the class. And as a result, that student is favorite for all the teachers. Not only the teachers, but even the student as well. We always try our level best to achieve such kind of the right favoritism and popularity in our life, where everyone will come and they will appreciate you for whatever hard work done in your life, even in your academics. Throughout this interaction, I wish, since this is only for your benefit, this interaction is going to happen, that you will pay attention and you will try your level best to grasp whatever positive inputs is given to you. Today, thanks to our Vice Chairperson, Ms. Shweta Singh, like she has interacted with some of the personalities and arranged this interaction program. Within a moment, right, she will be here and just looking at like how beneficial this interaction for you, and you are going to take all the right positive output from this interaction. Now coming back to the topic, like who is going to interact with you? So the first of all,
I want to welcome Mr. Sumit ji. Can you give a big round of applause? He might be looking at a new phase, but he's not at all new for this VEENA NIKETAN. When this institution was started, he was the one of the founder, you can say that the person who is looking after everything, his emotion, he was sharing with me, like how emotionally he was connected with each and every bricks which is arranged over here, and he was talking about that. So you can say that he is one of the founder member of the VEENA NIKETAN in this way. So I once again welcome you, sir, at this your own campus which you have created earlier. And trust me, our teachers, faculty and this team actually working with the same dedication the way you have started. I know that dedication when the baby is crawling, you have saw that cannot be matched in today's. But I think they are trying to match with those optimum estimations which they have actually contributing for this organization. Now we have Mr. Abhishek. Mr. Abhishek, can you just show yourself? Thank you. Thank you. Okay, no problem. I know physical education, some of the teachers are standing outside. If you have the right extra exercise for clapping, I think teacher will help you out to go out and arrange yourself for the extra clapping. Why Abhishek is so important? Simple living, high thinking and high achievement. This is the best example when you look at the Abhishek. The Abhishek is a student like you, but he has done the things differently. That is why he is standing this side. What is this? Abhishek has achieved 729 rank in the JEE, if I am not wrong, JEE examination, and now he is studying in IIT. So that's a huge achievement. From a very simple background, the every person in the family was very proud, along with the faculty members, those who trained him, and the mentor. I think Sumit sir is definitely feeling very proud of being saving the state with their students. Now we have Amitabh, another person. Similar story, and he is nothing but in your courtyard. I used to say the courtyard, but all over Bihar is like your courtyard. He is studying in our own Bihar city, that is Patna city. In NIT Patna, he got the right admissions over there for the engineering courses. So wonderful achievement it is. And none other than the hero of the show, Mr. Panini. Can you stand up? Wonderful. So, I interacted with him 2 minutes, and I'm a big fan of Panini, the way he spent his time in schooling, and after that, the way he has worked hard at home. I was asking him, how you studied and how you're working hard. He told me, sir, this is a very simple story. So first, let me tell you what is his achievement. He got silver medal. He's a silver medalist in the Olympiad, astronomy and the astrophysics in all over the India. That's a huge achievement. You can clap for him. This is not the
story. If I am not wrong, he was the single candidate from Bihar. Yes, sir? He was the single candidate from Bihar who was shortlisted for this Olympiad. And the most important part, he is a state topper of JEE examination, and he is studying, I think, in IIT Kharagpur, Delhi, IIT Delhi. It's a state topper. When I asked him, have you focused more on coaching? No, sir. My schooling was the right favorite place. When I used to interact with my teacher, used to clear my doubts, and that day I always miss. When I say that, is it necessary like schooling and coaching are contributing you to achieve this position? He simply said me, no sir, it's only student. It's only student who create this difference. Obviously, this is a story I think you should listen from his mouth. But before I invite Mr. Panini, I give this privilege to his mentor, Mr. Sumitji, to come over here and say something about the journey. And also request, there are so many myths about the Olympiad. I request him, please give you the guideline about the real Olympiad which is happening at an international level, so that my student will get benefited. And don't feel fear to ask any question at the end of the session. Even a small question will be taken very seriously. So what I suggest you, be ready with your question, but that question may be reframed after the interaction happened. So I am going to give this mic to Mr. Sumit. Mr. Sumit, please come over here. Thank you very much. Thank you, sir. Good morning, everyone. Let me introduce myself. I am Sumit. I am graduate from IIT Bombay and founder of Smart Care and VEENA. Now, ask question is too important to know because where you are sitting, a few years back, these students are sitting here. जेई के बारे में सबको पता होगा आईटी क्या होता है, नीट क्या होता है, वो सब लोगों को पता होता है, राइट? You have online class 8, 9, 10, right? So most of you know about that. Olympiads एक बहुत important and काफी international importance का एक examination होता है, जिससे बहुत कम बच्चों को पता होता है, खासकर बिहार में. We have very less information regarding that. उसका simple सा example देखो, in last decade, he is the only medalist from Bihar. Only medalist. And मैं पानी को लेकर बता रहा हूँ, अभिषेक भी है, काफी they have also qualified few stages of Olympiad, mathematics Olympiad. And आज का session really it won't be more about JEE or NEET, it will be more about Olympiads and what is the importance of Olympiads. So बीच में मैं बताता हूँ like about their achievements. अभिषेक has qualified RMO, Antares also qualified RMO, regional mathematics Olympiad. Pani in 2023 he qualified. He was the only Indian to qualify 3 camps for 3 years: physics, chemistry, and astronomy and astrophysics. Last year, 2024, he got silver medal for India in international Olympiads on astronomy and astrophysics, which happened in Brazil. This year also he is representing India. तो आज का सेशन में तो ये कौन से ओलंपियाड्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडोर्स करती है, इसमें आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें, बिकॉज ओलंपियाड्स में आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी ओलंपियाड्स में होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है. बट बेशक जो ओलंपियाड्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडोर्स करती है, उनकी क्या स्टेजेस होते हैं, किस क्लास अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज क्लास 8 के बच्चे हैं, तो दैट इज द स्टेज जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. So regarding that, हम लोग दो सेशन करेंगे. After that, अपने academics, non-academics का कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो हम लोग से you can ask. Okay? तो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं. I'll ask Pani to come on stage and Olympiad से वर्णन किया जाता है. Hello, my name is Pani. I'll start the topic. Today I'm going to talk about Olympiads. We have been giving many Olympiads in our schools, those soft Olympiads and many other Olympiads. But most of us don't know about the
Olympiads that are conducted by our government. They are very important ones and they have major role. So ये जो ओलंपियाड्स की मैं बात कर रहा हूँ ये इंडियन नेशनल ओलंपियाड्स होते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है और ये एकमात्र तरीका होता है. इट्स द ओनली वे थ्रू विच यू कैन रिप्रेजेंट इंडिया in international, like all of you know about Olympics, right? So what happens in Olympics? Some people are selected from India and they go and represent India in the Olympic Games. Similarly, Olympiads are Olympics of science and studies. So in the similar way, in India, students are selected and they go on international level and represent India and bring medals. So today I am going to talk about those Olympiads, and these are the only Olympiads through which you can represent your country. So it is Indian National Olympiad. So as Sir has told, these are some of my achievements. So basically, now I will start with the importance of science. Everyone here knows about science, right? But what actually science is in our practical life. So we have been studying about science in textbooks from many years, right? But what is missing in India is like अगर हम आप अपने आसपास में देखें तो बहुत कम बच्चे होते हैं. मतलब मैं बहुत कम बोल रहा हूँ तो ये मैं लाखों में एक बोल रहा हूँ. बहुत कम बच्चे होते हैं कि खासकर इंडिया की प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बस टेक्स्ट बुक्स की चीज़ों को पढ़ते हैं, उन्हें बस एग्जाम में अप्लाई करते हैं. डेली लाइफ से क्या अपने आसपास की चीज़ों से प्रैक्टिकल हमें नॉलेज बहुत कम होता है रिलेटिव. इसकी वजह से मतलब हम बहुत फेमस होते हैं कि इंडियंस को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होता है. तो बेसिकली ये हमारे अंदर जागरूकता आनी चाहिए. वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस दैट वी नीड टू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ थिंग्स वी आर स्टडीइंग इन आवर टेक्स्ट बुक्स. सो हाउ कैन वी गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ थिंग्स? हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, हम अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं. तो प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल यूज़ को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? हम जब हम कोई भी काम करते हैं, हम जो ह्यूमंस होते हैं हमारे अंदर इनबिल्ट फीचर है, हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर अनकॉन्शियस नॉलेज होता है चीज़ों को लेके. हम बहुत अच्छे तरीके से हमें फिजिक्स अप्लाई करने आती है. जब किसी चीज़ को हमें मूव करने में दिक्कत हुई या कोई काम हम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली नहीं हो रहा तो 2-3 बार ट्राई करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ ईजी हो जाएगी. तो बेसिकली हम क्या करते हैं? हम प्रैक्टिकली साइंस को अप्लाई करें, बट हमें पता नहीं है कि उसके पीछे की रीज़न है. अब ये जो छोटा सा पॉइंट है कि हमें रीज़न नहीं पता है कि उसके पीछे की चीज़ है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. क्यों? ये जो टेक्स्ट बुक से और एक प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट करके नॉलेज चीज़ों को अप्लाई करने का तरीका होता है, ये गैप उसमें बहुत बड़ा मेजर ऑब्स्टिकल होता है. सो हाउ कैन वी ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल? सो बेसिकली जब आप कोई भी काम कर रहे हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, बचपन से हम कितने साल हो गए, 15-14 साल के हो गए, तो हमने इतनी सारी चीज़ें जिंदगी में की. क्या जब भी हम कोई काम करते हैं 10 सेकंड सोच के अगर हम सोच लेंगे हमने किया क्या जिसकी वजह से मेरा काम किया, तो वो चीज़ क्या होगी जो आपने घंटों बैठ के जो मेहनत करके पढ़ाई की उसको आपने 10 सेकंड के अंदर उसके प्रैक्टिकल यूजेस को सीखा. ये फर्स्ट स्टेप होता है अपने आप को डेवलप करने का. आपको हर पॉइंट पे अपने आप को डेवलप स्किल अप करने की कोशिश करनी चाहिए. तो मतलब आप गाड़ी से चल रहे हो, आप बगल वाली कार को देखते रहते हैं इंजॉय करने के लिए कि कुछ तो होना चाहिए मुझे, मतलब बोरिंग ना हो सका. तो हम जब उस कार को देख रहे हैं तो उसके व्हीकल्स उसके जो व्हील्स हैं उनको देखेंगे, उनकी मूवमेंट को देखेंगे, कुछ पता चल रहा है तो उसके बारे में कुछ सोच लेंगे. और भी किसी चीज़ को देख रहे हैं, बोट चल रही है रिवर के अंदर, तो हम उसके पीछे के ट्रेल्स को देख लेंगे क्या होगा. तो बेसिकली आप साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्स्ट बुक्स, यू शुड अप्लाई इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. व्हेन यू विल डू दिस you will be far better than any other student in your vicinity, because very few of them use such things. So science is obviously very much important because in today's time innovation is one of the major
chances for people. So, science is obviously a very good path for innovations, and obviously, there are many opportunities in education, so it's very much important. So the main thing was we should be knowing the practical use of things, and Olympiads are based on this. You should have the concrete knowledge of things. How will you get concrete knowledge? When you will apply it in your daily life. By applying it just means you have to think for few seconds like what you did, because you are doing all the things. So coming on Olympiads. Olympiads के अंदर क्या चीज़ है? उसके अंदर बस यही चीज़ है, आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है वो यहाँ पे जज नहीं होता है। आपने कितनी सारी बुक्स पढ़ ली, ऑब्वियसली वो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती है, लेकिन वो एक मेन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे मेन फैक्टर है आपने टाइम दिया है चीज़ों को, आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है। इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Now, as I said, it's the only government conducted Olympiads through which you can go to international levels. And so basically, these government conducted Olympiads, there are 14 such Olympiads, out of which 6 Olympiads are very major nowadays. These are physics, chemistry, mathematics, astronomy and astrophysics, informatics and earth science. So, and if you are interested in non-science subjects also, there are Olympiads for that. There is linguistic Olympiad, it's on my name, PATNA linguistic Olympiad. So, moving on, what's important for Olympiads? You should develop your problem solving skills and analytical skills. It's very important for our life also. Whenever you face any problem, you should know how to solve those problems. So in Olympiads, by gradually when you solve questions, it's not a very short preparation, like it's something for a few months or a single year. It's a procedure of 5 years. Like you see, basically Olympiads start from class 8 to class 12. They are for students from class 8 to class 12. And this is a total time span of 5 years. So you will be gradually learning a lot of things and you will be developing your brain. So, and obviously you will be representing your country in the internationals, and it will be a very proud moment for all of us, right? When you will hold your country's flag. And one important thing is that, like when you see when anyone gives exams of Olympiads, like जब भी हम Olympiads के एग्जाम देते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत इंक्रीज करता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, आप क्या समझोगे Olympiads के जब वो क्वेश्चन को करते हो? वो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं होती है, एक सिंगल स्टेप में मेरा क्वेश्चन था वो खत्म हो गया। वो एक पूरा प्रोसीजर होता है, आप उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। कैसे पार्ट्स हैं? आप डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास में करते होगे, आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। मेरे साथ भी होता है, आज भी मैं 5 साल से मैंने Olympiads की तैयारी की, मैंने इतने साल दिया, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस किए, मैं सोचता भी हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों को देखकर। तब भी जब मैं आज भी एक कोई नया क्वेश्चन करूँगा तो मुझे रियलाइज होगा कि ये चीज़ के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, और मैं आज तक नहीं सोचा मैंने। और जब आप उसके पीछे के मैकेनिज्म समझोगे, आपको जब रियलाइज होगा तो बहुत अच्छी खुशी अंदर से मिलती है। तो बेसिकली Olympiads is a very enjoyable process. You will enjoy it at every moment. So moving on about now what are Olympiads? I have talked about that. Now basically what are the different stages of Olympiads? So आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 8 में और 9 में, तो आप लोगों के लिए बेसिकली जो Olympiads है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। साइंस Olympiads, एक मैथ्स Olympiad होता है, वो 8 to 12 क्लास के हर एक बच्चे के लिए होता है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है IOQ, राइट? समझ से राइट। सो जो IOQ है
वो 8 to 12 के सभी बच्चों के होते हैं। जो साइंस के ओलंपियाड्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 8 और 9 के बच्चों के और 10 to 12 के बच्चों के। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि दो पार्ट्स में, तो उनके पेपर सेम होते हैं, 8 और 9 के बच्चों के भी पेपर सेम होंगे और 10 to 12 के बच्चों के भी पेपर सेम होंगे। तो जो 8 to 9 के बच्चे हैं उनके लिए होता है जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो बेसिकली इसके अंदर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ये इसके अंदर तीनों कॉम्बाइंड रहते हैं और ये रिलेटिवली सिंपलर होता है सीनियर ओलंपियाड से, जो कि 10 to 12 के बच्चों के होता है। तो जो मैं ओलंपियाड्स बोल रहा हूँ, इन सभी का जो पहला स्टेज होता है वो होता है NSE। NSE होता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। अगर वो फिजिक्स की है तो NSE होगी, अगर वो जूनियर साइंस की है तो NSE होगी। सिमिलरली सो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर साल अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट के ओलंपियाड्स के लिए अप्लाई करते हैं। हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन राइट, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उसमें भी यहाँ पे जो ओलंपियाड्स हो रहे हैं वो 4 क्लास 3 क्लास के कॉम्बाइंड हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से बस 1 लाख स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर इट। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर बहुत कम अवेयरनेस है, खासकर जब हम बिहार के अंदर जाएंगे तो और भी ज़्यादा कम अवेयरनेस है। लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता यहाँ पे